Hello my dear students, I hope you are practicing the tense very with wholeheartedly, I must say. पूरे दिल से, पूरे तन मन से tense revise कर रहे होंगे rules and adding new words in vocabulary to enhance your English. I have told you again and again in each and every video. I have remind you that if you want to improve your English, you have to pay attention towards your pronunciation, vocabulary, then grammar. Okay, firstly pronunciation, then vocabulary. Add word as many as you add word in your vocabulary, your English will be much better day by day. Okay, you will see tremendous change. And we have discussed indefinite tenses, continuous tenses, perfect में हम लोग present perfect and past perfect discuss कर चुके हैं. Today we are going to discuss the future continuous tense. In future continuous tense we use shall, will, have. यहाँ पे एक ही बस have रहेगा, has नहीं. Okay, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. यहाँ पे विल हैव, शेल हैव जो भी लगाना है, बट हैव रहेगा, हैज नहीं आएगा. और यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, ये तो आपको क्लियरली अब तक पता चल चुका होगा. इट मस्ट बी क्वाइट क्लियर टू यू पीपल दैट इन परफेक्ट टेंसेस वी यूज ओनली थर्ड फॉर्म. There is use of third form only in perfect tenses. Okay, so in future perfect tense we will again use the third form. Okay, the very first sentence, let's practice some of the, we have discussed the rules and let's practice some of the sentences from future perfect tense. The very first is, सूर्य अस्त होने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे. वे ज्यादा हैं तो दे विल हैव. घर पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश रीच है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी रीच्ड. घर की इंग्लिश होम, रीच्ड होम. किससे पहले? बिफोर द सनसेट. ओके, शाम होने से पहले अगर होता बिफोर द इवनिंग. ओके, दे विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेगेटिव है तो नॉट, विल नॉट हैव बीच में आ जाएगा. ओके, रीच द होम before the evening and before the sunset. अगर question, okay, interrogative sentences है तो will पहले आ जाएगा. Will they have not, ये will they have reached home. Getting my thing? All of you are going to practice all the sentences which we have already discussed and new one also in negative, interrogative, in all the, okay, in all the form. This will quite improve your English. The next one is, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले सारे तैयार होंगे. They all will, वे सारे तैयार, पहुंचने से पहले सारे, यहाँ पे सारे, वे सारे नहीं हैं. All will have ready before you reach there. कल इस समय तक मैं दिल्ली में पहुंच चुका होगा. I shall have या will have reach Delhi tomorrow at this time. कल इस समय तक, tomorrow आने वाला कल है तो tomorrow जो बीत चुका है वो yesterday. ठीक है, I shall
reached Delhi. Delhi is noun, so we will write in capital word. Delhi tomorrow at this time. Okay. The next है, सभी विद्यार्थी अगले सप्ताह तक फीस दे चुके होंगे. All the students will have all the students will have paid fee by the next अगले सप्ताह, by the next week. Okay, by the next week. Then next, तुम्हारे जागने से पहले सूर्य निकल चुका होगा. The sun will have risen before you wake up या get up. Wake up या get up. नेक्स्ट है, सूर्य डूबने से पहले ये समाचार सारे नगर में फैल चुका होगा. This news will have spread in the whole town, in the whole city, या town, before sunset. Before the sunset. तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माँ खाना पका चुकी होगी. The mother will have यहाँ पे आप कुक्ड भी कर सकते हो, प्रिपेयर्ड भी कर सकते हो. ठीक है. will have cooked the food, simple, before you reach home. Okay, the next है, बरसात शुरू होने से पहले फसलें कट चुकी होंगी. द फार्मर, बरसात शुरू, फार्मर नहीं है यहाँ पे. द क्रॉप्स विल हैव हार्वेस्टेड या फिर राइट. ठीक है. द क्रॉप्स the crops will have reaped या harvested before the rainy season set in.
Today we have practiced future perfect tense, and we have already discussed the indefinite, present indefinite, past indefinite, future indefinite, then continuous tense, present continuous, past continuous and future continuous. Then we have also discussed the perfect tense, present perfect, past perfect and the future perfect tense. The thing is, you have to practice. Grammar is nothing but a lot of practice. Need a practice, lot of practice, and practice makes a man perfect. मैंने कहा, आपने सुना, बस ये काम नहीं बनेगा. डे बाय डे ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा strong determination, hard work. This will improve your English within a month. Within a month, tremendous change. Confidence. You will find some sort of confidence in yourself that you can do more better in a better way. Okay, and then you become best. Okay, I hope you understood today's topic, but still topic need tense, and we will practice more and more. That's all from your Aradhna ma'am. Before leaving, I want to again remind you, like, subscribe and share my channel to all. That's all from your Aradhna ma'am.